You on behalf of. So students, as you are aware, we are going to start today with trigonometry, right? So I think you must have started with this chapter in your school. Have you started, students, trigonometry? Yes, sir. Right. So how comfortable you are in this topic means you have done which topics? Have you done the conversion of degree into radian and vice versa? बच्चे कर लिया आप लोगों ने डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन? Yes, sir. Yes. And have you understood how to find the value of various trigonometric ratios in all quadrants? Yes, sir. Right. So we'll start with these basic things. I'll check, right? Okay, today, what is your comfort level on this, right, students? Right, students. Just have a look at this question. Now, in this question, this is a question on the basis of your 10th study, right? 10th class में जो आप लोगों ने trigonometry की study की थी, this question is on the basis of that, right? Can you do this question, students? It is given to us that cosecant theta minus sin theta is equal to m and secant theta minus cos theta is equal to m. You have to eliminate theta. Can you try this question, students? Yes. Tell me yes or no. We have to eliminate theta in this. Can you hear me, students? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आ रही है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes or no? Right. चलिए. Basically, this thing we have done in class 10th. So, if you are not comfortable with this question, we let me do some basic concepts and then we will move to these questions. Right? So now what we have to do in this question. Student, in 10th class, you have done some identities, trigonometric identities. Do you remember them? Student, do you remember them or not? Yes. बताइए बेटा कौन कौन सी आइडेंटिटीज की थी हमने? अच्छे 3 आइडेंटिटीज की थी हमने 10th क्लास में. डू यू रिकॉल देम? कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी बेटा? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Right. Let me do one thing. We start some of the basic things, right? We'll start with some of the basic concept of trigonometry first, right, students? Right. Then we'll move to some questions, right? So basically, we have first of all trigonometric ratios. Board is clear to you, students? Student, board is clear to you? Yes, sir. Right. So trigonometric ratios. First of all, we have 6 trigonometric ratios, students. I think you all must be aware. तो फटाफट से मैं आपको ये बता देता हूँ. I hope आप सबको पता है ये. Still, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. If you take a right angle triangle and theta is this angle, then opposite to this angle, the side of the right angle triangle is known as perpendicular, and this is your base and this is your hypotenuse, right? So ये सारा तो बेसिक आपने किया हुआ है. So cos theta is
Then we have tan theta, that is equal to perpendicular upon base, right? Then we have secant theta, that is equal to cosecant theta. It is a reciprocal of sine, right? And then we have cot theta, which is equal to base upon perpendicular, right? So apart from this, we have done three identities, and these identities were sine square theta plus cos square theta equal to 1. Is this clear, students? Is it clear, bache? Yes, sir. Please, wherever you find problem, please ask, right? I'm just reminding what you have done in class 10. Then we have secant square theta, which is equal to 1 plus tan square theta. Then we have cosecant square theta, which is equal to. So these were the three identities. Do you know the values of some important angles? What is the value of sine 60 degrees, students? What is the value of sine 60 degree? Root 3 by 2, right? What is the value of tan 30 degree? Value of tan 30 degree, students? Student, do you know how to find out these values or not? See, in class 10, हमने जो angles किए थे, they were from 0 degree to 90 degree. Now we'll be doing the angles जिसकी कोई लिमिट नहीं है बच्चे, right? So लिमिट नहीं का मतलब क्या है कि earlier you have done from 0 to 90 degree. Now आपके पास, let's say we have 215 degree angle, so we can have this angle also, right? So इन सारे एंगल्स की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है? और उसके लिए बच्चे हमें जो है बेसिक जो 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज है, वी रिक्वायर दोज वैल्यूज. दिस इज क्लियर? सो जस्ट मैं एक बार आपको टेबल बना के रिमाइंड करा देता हूँ बच्चे. अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती स्टिल यू कैन राइट दीज वैल्यूज. Do you know how to find the values? I think सबको पता होगा वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते थे. Do you remember? Yes, sir. Right. So values बताएंगे जरा आप. Sin 0 degree is sin 0 degree 0. 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 and 1. Right. Similarly cos का जो ऑर्डर हो जाता है बेटा वो रिवर्स हो जाता है. मीन्स cos 90 is 1 root 3 by 2. 45 पे sin theta and cos theta both are same, and 60 degree 1 by 2 and 0. This is clear? Then we have tan theta. Tan theta is tan 0 is student tan 0 0. 0. What is 1 by 1. 1 by root 3. Then what is the value of tan 90? Infinity or not defined, right? Similarly cot 0 degree is not defined, right? This is clear, students? Similarly secant is the reciprocal of cos and cosecant is reciprocal of sine. Is this clear, students? What will be the value of secant 0 degree? What is the value of secant 0? Reciprocal of cos 1.
What will be the value of secant 90 degree? Not defined. Not defined, yeah, infinity, anything you can write. What is the value of cosecant 0 degree? Not defined. 2 root 2, 2 upon root 3, and right, bacho? Is it clear? Yes, sir. Right. Next thing we come now. In 10th class, you have understood the angles in the form of degree measurement, right? Now we will understand radian measurement system of angles. Radian measurement. There is another method in which the angles are represented, and this is a more scientific way of representing the angles. This is known as radian measurement. Can anybody tell me what is the meaning of 1 radian, students? Please raise your hand if you know what is the meaning of 1 radian. Yes, students, please. No inhibitions, no confusion. If you know, please tell me what is the meaning of 1 radian. Yes, students. Now, let me explain what is the meaning of 1 radian. Student, if you draw a circle taking the origin as the center, we have drawn a circle taking origin as the center, right? Now, this is your radius. This is your radius. Yes, sir. Let's say we draw an angle theta. See, remember one thing, whenever you are drawing an angle, it is always in the anti-clockwise direction, right? If you draw this anti-clockwise like this, let's say this is theta. But if you draw it clockwise, what will be this angle? Can anybody tell me what will be this angle if you are drawing it in the clockwise direction? This angle will become, students, minus theta, because in this measurement system, whenever you are drawing the angle, you will move anti-clockwise. Is this clear? Is this clear or not? Yes, sir. Now, this is the length of the arc, right? तो बच्चे ये जो आर्क की लेंथ है, we take this length as L. Is this clear? Is it clear or not? Yes, Now, sir. in the radian measurement, what is an angle theta is equal to? This is the ratio of length of the arc upon radius, right? Theta, what is theta? Theta is angle. Now, when you are representing in this system, this is the radian system. Is this clear? Means L upon R radian. This will be your angle. Is it clear or not? Now, if the length of the arc, you have drawn theta in such a way that length of the arc and radius are equal. If length of the radius and length of the arc and radius are equal, then what will become? Theta becomes, what will theta become, students? Is this step clear or not? Now, what is the definition of radian? Angle theta is said to be radian, 1 radian, if the length of the arc and the radius of the angle
आर इक्वल मीन्स अगर आपके पास एल और आर की रेशियो 1 है देन इट इज 1 रेडियन. Is this clear? Is this clear, students, or not? Yes, sir. Now tell me what is the circumference? What is the circumference of a radius? What is the circumference of a circle, not radius, circumference of a circle. Yes, students. What is the circumference of this circle if its radius is r? 2 pi r. 2 pi r, right? If we take, let me draw on the next one. Students, if we draw angle, a complete angle, what do you mean by a complete angle? What is complete angle, student? Is this clear? A complete angle is full circle means 360 degrees. What is the straight angle? 180 degree, right? So if we take a complete angle and let's say we say this entire is theta, this complete angle is theta, right? Then what will be theta in term of L upon R? What will be the length of the arc subtended by the theta? What will be the length of the arc subtended by the theta? बच्चे ये पूरी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी ना? Yes or no? जी यहाँ पे आपने एंगल ड्रॉ किया. Let's say this is the angle. This angle is theta, right? What will be the length of the arc? Length of the arc कौन सी है बच्चे? यहाँ से स्टार्ट हुई, ये सारी लेंथ हो गई. What is this length? Won't this be equal to circumference? इस circumference की इक्वल नहीं हो गई आपकी length of the arc? Yes, sir. Yes or no? So what we can do, we can put in place of L 2 pi r divided by r. So it is cancelled. So how much this becomes? Right? So your theta in this case will be 2 pi radians. And this is in the radian measure. And what is theta in the degree measurement? What is the value of theta in the degree system, students? बच्चे कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है डिग्री में कितना है? इसमें थीटा जो है that is 360 degree. Yes or no? Yes, sir. So both these things are equal. If we call this complete angle in degree system, it is 360 degree. But when I call this angle in radian system, it is equal to 2 pi radians. Now what we have, 2 pi radians is equal to 360 degree, and your pi radians is equal to 360 by 2, that is 180 degree. Is this clear, students? इसको नोट करो बेटा फटाफट से. आप लोगों ने किया हुआ है सिस्टम सारा? Have you done earlier or not? बच्चे आप यस नो कुछ तो रिप्लाई कीजिए. टीचर प्रेजेंट, आई नीड योर हेल्प. If you can come forward, sir. Yes, sir. Sir, please just
ask students to communicate so that we can do accordingly. Because उनका input बहुत important है sir. Let them ask the questions, whatever I am asking, let them respond, right? कि जो आपने कर लिया है नहीं किया है, so that we can do accordingly. बच्चे बोलो क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे? रिस्पॉन्ड करो सर को. बेटा आपने किया है, आता है नहीं आता है, whatever it is, ठीक है ना? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड आप अभी भी फ्रेश जो है वो 10th से आए हैं और +1 में एकदम से लेवल चेंज हो जाता है, तो कई बार चीजें नहीं क्लियर होती. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन रिवाइज दैट और वी कैन ट्राई सम मोर वे टू क्लियर दैट. तो आप लोगों ने बेटा किया है ये पहले या नहीं किया है? वेरी गुड, ठीक है जी. तो बेटा ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आ जाता है जब हम डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट की बात करते हैं. तो इसको नोट करो फिर, अगर आप लोगों ने नहीं किया फटाफट से प्लीज नोट डाउन. ये जो रिलेशन आया ना आपके पास लास्ट में, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका आपने आगे सब जगह यूज करना है. जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन होता है स्टूडेंट्स डिग्री सिस्टम में और रेडियन सिस्टम में. हो गया बच्चों? नोट हो गया जी? यस सर. तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास आ गया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. अब पाई से 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 180 बाय पाई डिग्रीज, राइट? दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दिया. सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज. और इफ वी डू अदर वे अराउंड, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री, right? Is this clear? यस सर. Suppose you have to find the value of 60 degree. What will be the value of 60 degree in radian measurement? 1 डिग्री किसके इक्वल है बच्चे? पाई बाय 180 radians. So we have to find for 60 degree. So multiplied by 60 degree. So 60 degree will be equal to pi by 180 into 60. So this will be, so this becomes pi by 3 radians. So 60 degree is equal to pi by 3 radians. What will be 30 degree, students? What will be the value of 30 degree in radian measurement? 5 by 6. Very good, students. 30 से multiply कर दिया. So this comes out to be pi by 6. What is the value of 45 degrees? 5 By 4. What is the value of 75 degree? What is the value of 75 degree? Please find out.
सिमिलरली स्टूडेंट्स पाई बाय 180, अब वहां पे 60 मल्टीप्लाई किया 30 किया था, यू जस्ट मल्टीप्लाई हियर बाय 75. डोंट पुट डिग्री हियर बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इनटू रेडियन. टर्म्स कैंसिल आउट किया बेटा. 15 5s are 15 12s are, so this becomes 5 pi by. Is it clear or not? Right. Now what will be 120 degrees? Pi by 3. Pi by 2 pi by. Now, is this clear, students? How to convert degree into radians? Is this clear? Yes, sir. Now we come to the reverse. Means how we can convert radians into degree. Now we have 1 radian is equal to 180 by pi. Is this clear? Suppose कीजिए, I have to find the value of 1 radian in degrees. If we have to convert it into degree, put the value of pi as 22 by 7. So what this becomes? This is clear. Now I'll tell you one more thing. When we say our degree system, 1 degree is equal to 60 minutes. इसको जो डैश लगाते हैं ना बेटा, इसका मतलब होता है मिनट. 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट्स के इक्वल होती है. And 1 minute is equal to 60 seconds, right? Is this clear? This means seconds. 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बच्चे? 60 seconds. So similarly, 1 degree in a sense will be 1 hour, right? But इसको 1 hour नहीं बोलते हम. It's a degree only. 1 degree जो होती है that is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. Now जब भी आप कन्वर्जन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे और वो देखिए कैसे यूज करेंगे. अब यहाँ पे क्या किया आपने, कट कर दिया स्टूडेंट्स, राइट? यहाँ तो कोई डाउट? 1 रेडियन किसके इक्वल आ गए स्टूडेंट्स? 7 630 बाय 11 डिग्रीज. अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको हम ब्रेक करेंगे. कैसे ब्रेक करना है स्टूडेंट्स? अब 630 डिवाइडेड बाय 11, इसको लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड कीजिए. 630 बाय 11, तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 5 are then 80, so 7 are. आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया स्टूडेंट्स? व्हाट इज द रिमाइंडर? 3. So now how you can write 1 radian? 57 3 by 11 degrees. Is this clear? Can you write in this way or not? बच्चे ये वाला स्टेप समझ में आया ही नहीं आया? देखिए, अगर 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 1/2 लिखते हैं बेटा. Yes or no? Yes, sir. This is your quotient, this is remainder by divisor. तो सेम फॉर्म में मैंने लिख दिया है यहाँ पे. Now this 3 by 11 you have to convert this into minutes. उसको कैसे करते हैं देखिए. We can write this as 57 degree
दिस 3/11 इंटू मिनट्स, तो मिनट्स के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यू हैव टू फर्दर कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। वो कैसे करना है जी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 180 बन गया, तो 180 अगेन डिवाइड बाय 11, दिस इज 180, 60 इंटू 3 डिवाइड बाय 11, इसको फिर डिवाइड कर दिया, दिस इज 6। So now how you can write this as 57 degree 16 4/11 minutes। स्टूडेंट ये स्टेप क्लियर है या नहीं है जी? Yes, sir. Now further same way we will convert this 4/11 into minutes। वो कैसे करना है जी? मिनट 4/11 into 40, 240 को अगेन 11 से डिवाइड किया, now this approximately equal to 2। सो यहाँ पे हमें इसका फ्रैक्शन फिनिश करना है स्टूडेंट, सो वी टेक द क्लोजर वैल्यू। अगर आप 1 पुट करते हैं तो इट बिकम्स 11 व्हिच इज फार ऑफ, सो इट इज बेटर टू पुट द क्लोजर वैल्यू। तो क्लोज वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 22 सेकेंड्स अप्रॉक्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस हाउ टू कन्वर्ट? हैव यू अंडरस्टूड नॉट? Yes, sir. नोट करो बच्चों फटाफट, प्लीज नोट डाउन इट। यहाँ से शुरू किया ना हमने, जल्दी से नोट कीजिए। If you have any doubt, feel free to ask the questions. But please ask the questions. हो गया बच्चों नोट डाउन? नेक्स्ट पेज पे आए, हो गया था ना सबका पीछे वाला पेज? Yes, sir. राइट। तो बच्चों चले आगे। Yes, sir. Next students will understand how to find out the values of the various angles, right? ठीक है जी, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। इज दिस क्लियर? राइट। सो since you are doing this chapter as the first chapter, तो बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन का आई थिंक यू माइट नॉट बी अवेयर, तो थोड़ा सा मैं आपको साइन फंक्शन के बारे में बताता हूँ बच्चे। फॉर एग्जाम्पल
इफ वी हैव ए फंक्शन ऑफ साइन एक्स। आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए लास्ट क्लास में, ग्राफ ड्रॉ किए ना पॉलिनोमियल वाले चैप्टर्स में बच्चे? ऐसा ना, ये किस चीज का ग्राफ होता है स्टूडेंट्स? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? बेटा कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये? ठीक है ना। सिमिलरली साइन एक्स इज आल्सो ए फंक्शन, और इसका ग्राफ होता है फंक्शन। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो विल अंडरस्टैंड कि फंक्शन क्या होता है। तो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट, आई विल एक्सप्लेन यू कि जो साइन एक्स है, या फॉर दैट मैटर कोई भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका ग्राफ कैसे बनता है और वो कैसा दिखता है जी, ठीक है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? साइन एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, राइट। अब हम जब भी बात करेंगे स्टूडेंट्स, विल टॉक अबाउट द रेडियन सिस्टम। इज दिस क्लियर? विल टॉक अबाउट द रेडियन सिस्टम, राइट। फॉर एग्जांपल अगेन we have drawn a circle of unit radius. We have drawn this circle of unit radius. Unit का मतलब होता है 1 unit. Is this clear, student? Yes or no? What is sin theta? This is the ratio of perpendicular upon hypotenuse. Yes or no? Yes, sir. Now, if I take this as angle, this as angle theta, what is the length of OP? If OA is equal to 1 unit, what will be the length of OP? 1 unit. Very good. Now, you draw a perpendicular from here, that is, let's say B, right? This angle is 90 degrees. What will be sin theta here? Is this clear? Yes or no, students? Yes, sir. Now, if you reduce this angle, let's say this point is P1, and this angle now, smaller angle form is P1. Visible है सारा? Is it visible or not? Yes or no? Yes, sir. So students, let's say this point is B dash or B1. Now what will be sin theta 1? What will be sin theta 1? B1 B1 upon OB1. Sorry, ये OB नहीं आएगा, यहाँ पे OP आएगा स्टूडेंट्स। Will be OB, OP. Is this clear? Because it is hypotenuse, right? This will be PB upon OP, and this will be P1 B1 upon OP1. यहाँ तो कोई डाउट बेटा? No, sir. Now tell me whether this is greater or this is greater. 1 greater है या 2 greater है बच्चों? Whether 1 is greater or 2 is greater? 1. Why? Why 1 is greater? I am not talking about angle theta. I am talking about value of sin theta as a whole. See, दोनों के अंदर जो डिनोमिनेटर है, its value is same. बेटा डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है बच्चे? ये देखिए, ये ओपी है और ये OP1 है, राइट।
दोनों जो है वो रेडियस है या नहीं है? बोथ आर, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी ना बच्चे। देखो ये सर्कल है सूरज, ये सेंटर है, ये दोनों रेडियस है, तो दोनों की लेंथ सेम होगी ना। तो देयरफॉर डिनोमिनेटर तो सेम है, बट दिस परपेंडिकुलर P1 B1 is smaller than PB, so therefore ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी बच्चों। यस और नो? Yes, sir. नाउ इफ वी टेक वन मोर एंगल which is even greater, let's say this is θ2, और इसका परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, ये पॉइंट हो गया P2 और यहाँ पे पॉइंट आ गया B2, राइट। अगर हमने एंगल को और बड़ा कर दिया, सो व्हाट वी गॉट, साइन θ2 क्या हो जाएगा बच्चों? दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज which is P2 B2 अपॉन OP2। अब अगेन डिनोमिनेटर सेम है, सो ये वाली जो वैल्यू हो गई और ग्रेटर हो गई बेटा। यस और नो? Yes, sir. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। Yes, sir. जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। Yes, sir. Why it is increasing? Because जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, हमारा ये परपेंडिकुलर जो है दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग, परपेंडिकुलर की लेंथ इंक्रीज हो रही है, बट आवर हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट। हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है, बट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज इंक्रीजिंग। यस और नो? Yes, sir. नाउ व्हेन यू रीच एट 90 डिग्री, दिस लेंथ इज मैक्सिमम ऑफ परपेंडिकुलर। 90 डिग्री पे जाके परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज बोथ हैव द सेम लेंथ। Yes or no? Because your Yes. perpendicular becomes your hypotenuse, so both have the same value. Now if perpendicular and hypotenuse are same, what will be the value of sine 90 degree? What is the value of sine 90 degree? 1. 1. So how it comes 1? Because here the length of perpendicular and hypotenuse are equal, right students? So what is the meaning of this? As theta increases, as theta increases from 0 degree to 90 degree, value of sin theta increases। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है, बट हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ sin थीटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। यहां तो कोई डाउट? इज No, दिस sir. राइट? नाउ कम बैक, व्हेन एंगल इज फर्दर इंक्रीज, अगर 90 के बाद आगे इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन? सपोज दिस इज एंगल, तो यहाँ परपेंडिकुलर 1 यूनिट था, नाउ परपेंडिकुलर इज अगेन डिक्रीजिंग। देख रहे हो आप बच्चे? परपेंडिकुलर डिक्रीज कर रहा है। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. So what is the meaning of this? When you move from 0 to 90 degree, the value of sin theta increases, but when you move from 90 to 120 degree, value of sin theta increases। और 180 डिग्री पे जाके कितनी वैल्यू आ जाएगी? परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा हमारा। देखिए बच्चों, ये 180 डिग्री पे हम पहुंचे जब,
ये एंगल बन गया हमारा परपेंडिकुलर की लेंथ 0 हो गई बच्चे, बिकॉज हियर बेस एंड हाइपोटेन्यूज दोनों ने कोइंसाइड कर दिया, तो आपका परपेंडिकुलर था वो 0 हो गया। 0 डिग्री पे क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज मिनिमम। परपेंडिकुलर की लेंथ इंक्रीज कर रही है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बट एट 0 डिग्री द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 0। समझ में आ रहा बच्चों, नहीं आ रहा? ये देखिए, ये मैंने कुछ एंगल्स बनाए, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है जी, यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ दिस, बट जब एंगल और स्मॉलर होगा तो इट विल बी फर्दर स्मॉल, व्हेन इट विल बी 0 डिग्री द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री? 0. साइन 0 डिग्री स्टूडेंट्स 0. so why it is 0? Because the length of the perpendicular is 0. So as you move from 0 to 90 degree, value of sin theta increases, right? When you move from 90 to, अच्छा यहाँ पे sin की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 1 होती है। When you come at the 180 degree, it again becomes 0 degree. समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है? Yes, sir. राइट। सो पहले इंक्रीज की 90 तक, फिर डिक्रीज की। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, स्टूडेंट्स देखिए, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज साइन। जब आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अबव द एक्स एक्सिस। ये जो लेंथ होगी बेटा, ये पॉजिटिव साइड पे है वाई एक्सिस के, पॉजिटिव साइड पे है ना बेटा, पॉजिटिव। जैसे आप 180 डिग्री से एंगल इंक्रीज करेंगे, लेट्स से दिस इज द एंगल, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? दिस लेंथ। और ये लेंथ जो है ये नेगेटिव साइड पे आ रही है, दिस लेंथ इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो है वो फर्दर रिड्यूस कर जाती है। दिस इज क्लियर? मींस यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव, negative, and this quadrant also negative. Any doubt, students? Any doubt in this? No, sir. Right. So this concept is clear. Means 0 to 90 degree value of sin theta increases. 90 to increases from 0 to 1, and from 90 degree to 180 degree decreases from 1 to 0. Right? Similarly, from 180 degree to third quadrant, that is 270 degree, it decreases from 0 to -1. Right? Now, see, when you will come in the fourth quadrant, length of the perpendicular will be negative, but it keep on increasing. जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो -1 से 0 की तरफ चल रही है, नेगेटिव साइन है बट लेंथ इंक्रीज कर रही है। So from 270 degree 360 degree increases from -1 to 0. Any doubt student? यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज ask the question. Please ask the question student. हाँ जी, हैवी हो गया? समझ आया नहीं आया बेटा? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन?
चलिए मैं ना अब इसको ग्राफ बताता हूँ आपको कैसे बनता है। अभी मैं जीरो की फॉर्म में बता रहा हूँ, बाद में आपको रेडियंस में बताता हूँ। 0 डिग्री, 80 एंड 360। ये जो ग्राफ होता है ना साइन का, इट इज लाइक दिस, राइट? व्हाट वाज द वैल्यू एट 90 डिग्री? 90 डिग्री पे क्या वैल्यू थी साइन 3%? वैल्यू ऑफ साइन एट 90 डिग्री वाज 1। ये 0 डिग्री है, 0 पे 0 वैल्यू है, 90 पे 1, 180 पे अगेन 0, 270। व्हाट विल बी द वैल्यू एट 270? -1 एंड 360, राइट स्टूडेंट्स? ये ग्राफ क्लियर हुआ आप लोगों को? ये ग्राफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चे? देखो अगर आप वैल्यूज भी देते हो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? ये होती है स्टूडेंट 1/2। 1/2 होती है 30 डिग्री पे वैल्यू। 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री √3/2, and 90 degree it is 1. So it keep on increasing. Then it decreases till 270 degree. 1 से लेके -1 तक, and then it start increasing again. Is this clear? Any doubts, students? Similarly, अगर आप cos का ग्राफ बनाते हैं, what is the value of cos 0 degree? What is the value of cos 0 degree? 1. What is the value of cos 90 degree? What is the value of cos 90 degree? 0. cos की वैल्यू जो है वो इस तरह से ग्राफ बनता है, 0 से लेके 90 तक डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे कितना आ गया? 0 पे 90 पे वैल्यू 0, and then further at 180 degree it becomes -1, then it start increasing again. और कहाँ तक जा रही है वैल्यू? यहाँ पे 360 degree it is 1. Now 0 degree and 360 degree. Just understand students. This is 0 degree. यहाँ पे आप पूरा घूम के आए तो अगेन 360 degree and 0 degree. They are same. Are they same or not? Yes, sir. तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू वन है, 360 पे भी वैल्यू वन है। साइन के केस में अगर आप देखिए 0 पे भी वैल्यू 0 थी, 360 पे भी वैल्यू 0 है, राइट? These are the graph of the trigonometric functions, राइट? साइन का ग्राफ जो होता है ये 0 से स्टार्ट होके सेम शेप है दोनों की, बट ओनली डिफरेंस इज कॉस का जो ग्राफ है वो हायर से शुरू होता है, 1 से शुरू होके इट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन 180 के बाद इंक्रीज करनी शुरू होती है। अब यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको समझ आएगी। नाउ दिस रिप्रेजेंट योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट? 0 to 90 डिग्री। 0 to 90 डिग्री के अंदर वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के अबव है ना, तो पॉजिटिव
पॉजिटिव वैल्यूज, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू पॉजिटिव है। दिस इज 180 टू 270, 180 से 270 वाला थर्ड क्वाड्रेंट आता है, तो यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव, here are also values negative, means साइन जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव और दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ कम्स टू द कॉस, cos here is first quadrant positive, second negative, third negative, fourth, what will be the fourth? Positive. So cos will be positive, negative, negative. Now looking at these values, can you tell me the about tan? What will be tan in the first quadrant? Will it be positive or negative? Why? Because positive upon positive is positive. And in the second quadrant, negative. Why? Positive upon negative. Third quadrant, positive. Negative upon negative is positive. And here it is negative. Is this clear? Similarly, all other, what will be cot? Cot will be positive in first quadrant, negative in second, positive in third, negative in fourth. Secant, positive in first, negative in second, here negative in third and positive in fourth. Similarly, cosecant, positive in first and second, negative in third and fourth. Is this clear, students? और इसके लिए हम इसका मेथड है लर्न करने का। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड cos, और इनके फर्स्ट फैक्टर से हम ये बनाते हैं ASTC, एड। इसको लर्न करने के स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक क्लियर टू यू, और जो भी आपके डाउट्स हैं कुछ भी है, you shall talk to me in the next class. Right, students? Please go through this once. Thank you very much, teachers, for your. Thank you, sir. So I think you will have class